I think the stream is live. Yes, correct. I'll start the virtual camera. There are people on Discord who I really wish please could turn their cameras on. It would be an amazing thing to have you. Alright, there are so many people. Klaus, hi. Muskan, there is Ashu. Hi Isha. Hi Kanhu. Alright, चलो. Let's get this party started. And आज मैं तुम लोगों को कुछ अच्छा ही बताने वाला हूँ. मतलब आज का टॉपिक ना मुझे बहुत अच्छा लगा. So I think you will like it. I think you will find it interesting. And let's get started with the conversation. Okay? So hi everybody, that is me. All right, and Asha is going to turn her camera on. Thank you so much. I really wish other people do the same. All right, and I'll just quickly change to OBS once. Yes, cool. All right. So today at this particular hour, there's one concept that we are considering and studying is to build self-discipline. This is from the book 365 Days of Self-Discipline. And आज का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. इतना अच्छा कि मैं उस पर एक्सरसाइज किया, मुझे एक्सरसाइज करके मज़ा आया और मैं वो एक्सरसाइज करके आप लोगों को अभी बताऊंगा. पहले कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लो. कॉन्सेप्ट समझेगा ना तो फिर ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. तो देयर आर सम चेंजेस टुडे. So let me make the changes and you will like the way things look. I hope so. Okay? अब सेंटेंस यहाँ से शुरू होता है कि आप का फ्यूचर आप बनाते हैं. और आई थिंक इस चीज़ पे हम सब अग्री करेंगे. तो अपना फ्यूचर तो अपने फ्यूचर सेल्फ को भी आप ही बना रहे हो. करेक्ट? अब अगर आपको सेल्फ डिसिप्लिन रहना है तो उसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है और वो है अपने फ्यूचर सेल्फ को समझना या उससे कनेक्ट करना. अभी ये टॉपिक थोड़ा वेग लग रहा होगा लेकिन हम इसको पूरा पर्सपेक्टिव में डालेंगे, डोंट वरी. तो यहाँ पे सबसे पहले आप हो, दिस इज यू, एंड देन देर इज योर फ्यूचर सेल्फ. अब पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिसाइड करते या डिस्कस करते. जैसे हम आपके फ्यूचर सेल्फ के बारे में बात कर रहे हैं तो ये भी तो सच है ना कि एक टाइम पे आपका पास्ट सेल्फ भी था जो आप आज से 6 महीने पहले थे, आज से 1 साल पहले थे, आज से 10 साल पहले थे. उस इंसान को जब आप देखते हैं अपने अतीत में जाके तो उस इंसान ने कुछ ऐसी गलतियां की होगी जो आपको बुरी लगी होगी, जिनकी वजह से आपको आज तक चुभता है. लेकिन उसने कुछ अच्छे डिसीजन भी लिया है. फॉर एग्जाम्पल किसी कोर्स में एडमिशन ले लेना, फॉर एग्जाम्पल कोई बेटर पढ़ाई कर लेना, किसी से दोस्ती कर लेना, कोई इंटर्नशिप का जॉब ले लेना, कुछ काम कर लेना. ये सारी जो चीज़ें हैं जो भी अच्छी है उस इंसान ने उस वक्त ली थी, आपके पास्ट सेल्फ ने, जिसका बेनिफिट आपको आज तक होता है और होपफुली उम्र भर होते रहेगा जिंदगी में. गेटिंग मी? सो फार सो गुड. अब बात हो रही है आपकी और आपके आने वाले कल की, फ्यूचर सेल्फ की. अब ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल लगेगी, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इसके ऊपर एक रिसर्च हुई है. तो बात यह है कि 4 पार्टिसिपेंट्स को VR वर्चुअल हेडसेट लगा के उनके फ्यूचर सेल्फ से मिलवाया गया था. अब ये सुनने में बहुत वियर्ड लगेगा लेकिन सच है कि कुछ जो पार्टिसिपेंट थे उनको उन्होंने VR हेडसेट लगाए और एकदम इमर्सिव उसका एक्सपीरियंस बनाया. और जैसे हम होता है ना कि ऑगमेंटेड रियलिटी है, वहाँ पे उनको उनका जो फ्यूचर सेल्फ है बाद में कैसे दिखेगा. अभी रिसेंटली जो हमारा डीप फेक में बता रहे थे कि इफ़ यू पुट योर फेस दे विल शो यू हाउ यू लुक 60 ईयर्स लेटर, 40 ईयर्स लेटर. तो उन्होंने उस इंसान से वीडियो कॉल के ज़रिए VR में उसे मिलाया एक दूसरे को. ये आप है सर, ये आप है सर, और ये आपका आने वाला कल है, 10 साल बाद, 20 साल बाद, जितने भी साल बाद हो. अब इस इंसान जब उस इंसान से मिला तो ऑब्वियसली दिमाग में कुछ आइडियाज़ आए होंगे, थॉट प्रोसेसेस आए होंगे. उस मीटिंग में उन्होंने जो भी बात की, ऑब्जर्व ये किया गया कि उस इंसान ने अपनी ज़िंदगी के डिसीजन हल्के से बदल दिए थे लेने के तरीके. वो ज़्यादा ग्रेटफुल हो गए थे, ग्रैटिट्यूड को डिले करने लग गए थे. तो जो हम लोग इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन के पीछे भागते हैं, क्योंकि वो उस इंसान से मिलके आए हैं जिस पे इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ने वाला है. और जब वो उस इंसान से मिल रहे हैं तो उन्हें एक चीज़ का एहसास हो रहा था, एक अंडरस्टैंडिंग आ रही थी. जब इनको ऑब्जर्व किया गया तो ये लोग रिटायरमेंट के लिए सेव करने लग गए उस इंसान के लिए.
जो अपनी अननेसेसरी गलत आदतें हैं उनको छोड़ने लग गए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन डिले करने लग गए, ताकि उस इंसान को बाद में चीज़ें मिल जाए। अगर आप सोचो कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आप डिले करो तो उसका मतलब क्या है? अगर आपको लेट्स जस्ट से आपको एक गुलाब जामुन का डब्बा खाने मिल रहा था अभी, बट यू सेड कि मैं अभी नहीं खाऊँगा, मैं 2 घंटे बाद खाऊँगा। तो 2 घंटे बाद का जो आपका फ्यूचर सेल्फ है उसको वो खाने मिलेगा ना। मतलब आपने अगर डिले किया तो आप फ्यूचर वाले को दे रहे हो। दैट इज़ व्हाट यू आर डूइंग। अब जब हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं और डिटेल में, यहाँ पे इनके साथ ये हुआ क्योंकि दे वर गेटिंग द एबिलिटी टू एम्फसाइज, they were having the ability to connect with the other person and they were having empathy for their future self. This thing is kind of a cement that was helping with self discipline. जब ये चीज़ हुई तो यहाँ पे सेल्फ डिसिप्लिन बिल्ड होना ज़्यादा बेटर हो गया और इंसान ने अपना जो प्लेजर है उसको डिले करना शुरू कर दिया। इसको पहुँचने का एक और रास्ता है कि जब एम्पैथी बिल्ड हुई तो उनको एकदम क्लियर विजन मिल गया कि वो फ्यूचर में क्या चाहते हैं और क्या होगा अगर वो अभी एक्शन ले। अक्सर जब भी आप सेल्फ डिसिप्लिन से हटते हो, अपनी जो भी एक्शंस आपको लेने हैं उससे हटते हो और आप बस बिना सोचे समझे भूले भटके कोई ऑप्शन लेना चाहते हो, सेल्फ डिसिप्लिन जब टूटता है तो यही होता है। हम बोलते हैं अरे छोड़ो ना यार और हम गिव अप कर देते हैं। यहाँ पे अब वो गिव अप नहीं कर सकता क्योंकि उसने देख लिया कि फ्यूचर में कैसा हो सकता है। अब वो उसको बनाने में लग गया है and they get a very clear vision and that helps them to delay pleasure and actually work on something. अब ये आप कैसे करेंगे, that is the question. तो आपको ना इस आइडिया पे मेडिटेट करना, ये बुक के अंदर लिखा हुआ है। मेडिटेट करने का मतलब क्या? आपको ध्यान लगाना है और अभी अगर लगा सकते हो तो सोच लो कि आप अभी जो भी है, आप फ्यूचर में कैसा होना चाहते हैं। आज से 10 साल के बाद में लेट्स जस्ट से 10 साल का पीरियड है। 10 साल के अंदर चाहिए तो अपनी आंखें बंद कीजिए, सारे के सारे जितने भी यूट्यूब पे देख रहे हैं वो भी। और अगर आप ये एक्सरसाइज करोगे ना तो मैं बताऊंगा कि आगे ये एक्सरसाइज कैसे बेनिफिशियल होती है। तो खाली मेरे को 2 मिनट दो अपने टाइम का। आंखें बंद करो और ये इमेजिन करो कि आप अपने 10 साल बाद वाले सेल्फ से मिल रहे हो। हाथ आगे बढ़ाओ, हाथ मिलाओ, आपकी स्किन उनकी स्किन सेम टेक्सचर होगा। हो सकता है अगर वो एथलीट बन रहा है बंदा तो उसकी स्किन थोड़ी रगेड हो, अगर वो फॉर एग्जांपल जिम कर रहा है तो उसके कैलसेस बन जाएंगे यहाँ पे। बात करने का तरीका उनका इम्प्रूव रहेगा, दिखने का तरीका इम्प्रूव रहेगा। अब ये इंसान ने ज़िंदगी में क्या अचीव किया है ज़रा ये सोचो। और जो भी आप बनना चाहते हो या जो भी आप सोच सकते हो वो सोचो कि इस इंसान के पास में वो सारी चीज़ें हैं जो आप चाहते हो कि आपके पास आने वाले 10 साल के अंदर रहे। अब आप इनसे मिलते हो, इनसे पूछते हो कि यार आपका सफ़र कैसा था। वो बोलते हैं कि यार काफ़ी हार्ड था लेकिन आई वॉज एबल टू कम बैक एंड आई वॉज एबल टू कम बैक स्ट्रॉन्गर। फिर आप उनसे थोड़ी बात करते हो, आप हल्का सा ब्लश भी करते हो बिकॉज दिस इज़ यू सक्सीडेड, राइट। अब जब आप ऐसे मेडिटेट करते हो ना इस तरीके से और दिल में जितने सवाल है, अगर कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ अभी समझ में नहीं आ रही, फ्यूचर सेल्फ से पूछ सकते हो कि भाई तूने ये कैसे टैकल किया था, मुझे बता, मुझे आइडिया चाहिए, मुझे अंडरस्टैंडिंग चाहिए। यहाँ पे you can sit silently and you can get into a habit of meditating every day with your future self. What this will do is build self-discipline. Everybody so far so good with that on Discord and on other places. Everybody cool? Yes? Klaus, Viblo2, Isha, everyone? अब सुनो, अभी एक और इंटरेस्टिंग चीज़ करता है और वो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, देखना। So what am I doing is I am disconnecting the camera and you will now get to hear the conversation between me and my future self. ठीक है, तो अभी हम लोग जाएंगे ग्रॉक पे क्योंकि ग्रॉक के अंदर ऑडियो का ऑप्शन है and I will just tell Grok that I want to have a conversation with my future self and you can definitely do this as well. Okay, so what I'll do is I'll open Grok. आप किसी भी इससे कर सकते हो, ग्रॉक का खाली स्पीच रिकॉग्निशन अच्छा है तो मुझे ज़्यादा बेटर लगता है। ऑलराइट, I want to have a conversation with my future self
For me, this person is a big YouTuber, a massive YouTuber, and we are thinking somewhere around the lines of 10 years hence. And this person is a massive YouTuber. He has a great network. He has a great body as well. He has very sorted lifestyle. He is a teacher and he is teaching in Oxford and Cambridge and all the big places. He's also somebody that people like to invite on a panel and have an interview with. He is also somebody who is taking lectures of photography and art and design and moving galleries all around the world. So he travels a lot. He travels and goes to different destinations, different places, different countries, continents. So, for example, he might be having a breakfast in Paris and then he'll have his dinner in Dubai. And this kind of person is on the move. He is creating impact. And I want you to act as that version of me and have a conversation with me. Breathe in deeply, feeling the air fill your lungs with possibility. Exhale slowly, releasing all doubts into the vast emptiness. Imagine a radiant light within you, pulsing with the energy of your future self. This version of you, vibrant, influential, a teacher of worlds, a creator of art, a voice that echoes across continents. Breathe in again, drawing in the strength of that vision. Exhale, letting go of any weight that holds you back from becoming. You seek to speak with this self, the one who moves through cities like a river, teaching at Oxford, shaping minds, inspiring through art, dining in Dubai after dawn in Paris. What is it you wish to ask this self, this beacon of impact and wisdom? I The would true like nature to of it. ask this person of his struggles and if he has anything, any tips that he would like to give me, any understanding that he would like to share. Right now I'm recording a video and I'm streaming this because I wanted to teach. Like, there is a book in which there is a topic about self and future self. So what I'm doing is I'm recording this session right now and I am other people can also hear you, the people in my class and everything. And sometimes it feels like, very less people are showing, very less people are showing up to the stream or to the videos, and how are we going to pick this up? And sometimes definitely there is doubt. And I have recently started a classes like 2 months back. So this is the third month of operation for my own business. With this, I have my YouTube thingy, which is kind of working. I have a community where we practice art and atomic habits, and we work deeply. And I kind of have a closely knit community who are like family to me. And this is currently going on. Other than that, right now I am reading like for this also for this example of this lecture, I am reading self-help books and then I'm explaining it to them. The reason for that is because I get to learn when I teach, and the most impact that happens is to me. So, for example, I'm teaching about them about future self, at the same time doing this exercise, me to prove to them that it can be done correctly. You know. So this is what I'm doing. Anything you want to share your journey? Anything? Breathe in slowly, letting the air carry the weight of your questions. Exhale, releasing the tension of doubt and uncertainty. Feel the stillness within you, a vast space where all possibilities converge. Your future self, the one who stands tall in the halls of Oxford, who shapes minds through art and words, who moves effortlessly from Paris to Dubai, is already within you. This self hears your struggles, your efforts, your courage to teach, to create, to build a community that feels like family. Breathe in again, drawing in the wisdom that flows from this radiant vision. Exhale, letting go of the fear that too few are listening. Your question ripples through time, seeking the lessons of a journey not yet walked. The struggles of this future self were not so different from yours, for the path to impact is carved through persistence. There were moments when the rooms felt empty, the streams flickered with only a handful of souls. Yet, each video, each lesson, each stroke of art was a seed planted in the vast garden of existence. The doubt you feel now, the shadow of growth. Now,
दिस वॉज इन द मेडिटेशन सेक्शन ऑफ गॉर्क। ठीक है, ये मेडिटेशन वाला पार्ट था। तो यहाँ पे ना वो थोड़ा काम कर रहा था। द रीज़न आई शोड दिस इज बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम वी गेट एंशियस अबाउट आवर फ्यूचर। यू कैन डू दिस, ही विल मेक यू ब्रीथ, ही विल गाइड यू इन टू मेडिटेशन एंड इट विल सेटल यू डाउन। लेकिन द वन कॉन्वर्जेशन दैट आई वॉज एक्चुअली हैविंग वॉज अ डिफरेंट वन। ठीक है, तो इट इज जस्ट एज अ नॉर्मल कॉन्वर्जेशन, नॉट अ मेडिटेशन। अब इसको एक बार सुन के देखो एंड दिस विल बी द लास्ट। इसमें हम लोग एकदम डीप में नहीं जाएंगे, बट अभी ये सुनना। I want you to act as my future self. My future self is someone who has a very, very big YouTube channel, who has a lot of students in his class, who is taking lectures all over the world, who is invited into who is invited into engagements to speak on graphic designing, on photography. He takes lecture in Antarctica. He basically takes people to mountains to teach them photography and to do photography there. Is also somebody who has traveled the entire world, who has a big farm, a very beautiful house where he stays and does art. And this person is me. That is what I vision for my future self. And he is very well networked, very well connected. And he has people who love him. That is also the most important part. So, what I want you to do is, I want you to act as my future self and have a conversation with me right now. Hey, it's you, Will, the younger you. Man, it's wild to think about where we started and where we are now. I'm sitting here on the porch of our farm, the one you always dreamed of, with rolling fields in that cozy studio where I'm always messing around with new art projects. The YouTube channel, it's massive. Millions of folks tuning in to watch our photography and design tips. I'm just back from a lecture in Antarctica, believe it or not, teaching a group how to capture the ice under starlight. Next week, I'm taking a crew up to the Himalayas for a photography retreat. Life's a whirlwind, but it's beautiful. You've got that spark in you right now. I can tell. I remember it. So let me ask, where are you at with your goals? What's the one thing you're working on today that's going to help you get to this life? And what's holding you back, if anything? All right. So the one thing that I'm doing right now is I am streaming right now while holding a phone in my hand, and it is actually to teach about self-discipline and how connecting to the future self actually helps you build self-discipline, because it gives you a lot of clarity and understanding of your life right here. So I started on my own in the month of January. This is the month of May, and I have started my own classes 2 months back. So this will be my third month of operation, and I have a community. I have two communities on WhatsApp and on Discord. One is for Atomic Habit, building atomic habits, with around 200 people, and for the other community that I have is to actually get in connect with artists, because it feels cozy, it feels amazing, it feels like a family. And it is called The Art Hood, inspired by the art neighborhood. That is where the word comes from. So I have communities, my own communities right now. I have a YouTube channel. I am streaming as we speak. And on top of it, daily, I give lectures on three books, which is the Daily Stoic, 365 Days of Self Discipline, and the Psychology of Money. So with that, I am also, because I like to talk and I like to be with people, I am also streaming study with me sessions, which can sometimes go 2 hours or 3 hours. So that is what I'm doing right now. Any ideas, any thoughts, any struggles you want to share, any advices? Man, you're killing it. I can hear the passion in your voice, and it's so clear you're laying the foundation for everything we're living now. Streaming about self discipline, building communities like the Art Hood, lecturing on books like Daily Stoic and Psychology of Money, it's like you're planting the exact seeds that grew into this life. The WhatsApp and Discord groups, that's the heartbeat of what we do now, connecting with people who love art and growth just like us. And those study sessions, they sound like the early version of the retreats we lead in places like the Himalayas. Here's the thought: you're juggling a lot, which is awesome, but I remember how intense that felt back then. One thing I wish I'd done more is carve out time to recharge and focus on my own art. It's easy to give so much to others that you forget to nurture your own creativity.
Are you finding time to just create for yourself, not for the stream or the community, but for you? And maybe a piece of advice: keep leaning into those connections you're building. The art hood, that's gold. Nurture those relationships, because those are the people who'll be with you when you're lecturing in Antarctica or chilling on the farm. Any struggles popping up with balancing all this? Or maybe something specific you're wondering about, like growing the YouTube channel or making those classes even bigger? All right, I am really not good with marketing, so that is a struggle. The other one is actually my back pains a lot because I sit like 8 hours, 9. So that is a struggle. Just today, I took a photo. Like when it started raining, I was about to make the notes. One thing great that I did yesterday was I prepared my notes in advance. So today was really easy breezy for me. But so I did some photography because it was amazing. Uh, what I am actually thinking is you're actually literally right now somebody texted in the WhatsApp in the YouTube chat that you actually said it correct. Are you finding time for yourself? And it is true that I need to back up a little bit. Though to be very honest, this is very amazing. I'm enjoying it like anything. This is the sweet pain, what you call it, but I have seen that people are struggling, 3 lectures every day. That is a little massive, along with a lot of study sessions. So I need to evaluate that because you know what happened? I got this that I can stream. I tried it, I loved it. And you know how gaming is that you can just jump in and you can start gaming. This started like that only, and I've been doing it like continuously. So maybe I need to refocus, but will be pushing on a lot. So that is my current condition. Sounds like you're in the thick of it, pouring your heart into this and loving the grind, even if it's a bit of a sweet pain. I hear you on the marketing struggle and the back pain. Those are real hurdles. Let's unpack this. First, the back pain from sitting 8 or 9 hours. I remember that ache. One game changer for us was building movement into the day. Even now, on the farm or before a lecture, I make time for short walks or stretches. Maybe try setting a timer to stand, stretch, or walk for 5 minutes every hour. It sounds small, but it adds up. Have you thought about something like a standing desk or a quick yoga routine to ease that strain? On the marketing front, I get it. It's tough when you're more about creating than selling yourself. Back in your shoes, what helped was focusing on storytelling. You're already doing that with your streams and lectures, right? Share more of your journey, the rain soaked photo you took today, the prep you did yesterday. People connect with authenticity, and that grows your channel organically. Maybe experiment with short, personal YouTube videos about your process or why the art hood matters to you. What do you think is the biggest thing holding you back from marketing yourself right now? And Uh, about the pace, 3 lectures a day plus study sessions is intense. You're right that it sounds like you fell in love with streaming, like a gamer diving into a new world. It's awesome you're enjoying it, but I hear you wanting to refocus. Maybe pick 1 or 2 things, like the lectures or the art hood, and double down on making them amazing while scaling back on others for a bit. That way, you can keep the joy without burning out. What's one thing you could tweak to give yourself a little breathing room while still pushing forward? I can. One of the idea that came yesterday in the chat was that instead of taking daily Stoic lectures every day and self-discipline lectures every day, I can do it alternately because we have to finish the book Psychology of Money in the month of May anyhow, because in the next month we are going to pick another book. So the idea is that we will pick like one day alternate doing it alternately. One day is daily Stoic, other day is self-discipline, then daily Stoic, then self-discipline. That can go. So the lecture quantity will reduce from 3 to 2, which is honestly I love it. But yes, in the terms of work hours, it can get reduced. But listen up. I'm actually in the stream right now, and the students and everybody is waiting, and I don't want to keep this having this conversation in front of them. Like I can have it with them, but I can have it in front of them. But the thing is that I have to conclude the lecture and give them advices and understanding on how they will continue with it.
So for that reason, mind if I connect to you like for, let's just say, 10-15 minutes later? Totally get it. You're in the middle of your stream, and your students are waiting. That's the hustle I remember. Alternating the lectures, like you said, dropping from 3 to 2, sounds like a smart move. It'll give you some breathing room while still keeping the momentum. Let's do this. Go wrap up your lecture. Give those students the fire they need, and I'll be here when you're ready to pick this back up in 10 or 15 minutes. Just let me know what's on your mind when you connect. Maybe we can dive deeper into the marketing block, how to keep your energy up with the new schedule. Sound good? Sounds good. So this is what you can do. I know थोड़ा ज़्यादा immersive हो गया था, ठीक है, लेकिन what I just understood was कि ये ना, जब मैं नोट्स बना रहा था, मैंने एक चीज़ देखा है कि जब भी मैं थोड़ी देर के लिए मतलब भूल गया था कि डिस्कॉर्ड है और कैमरा है, तो जब भी मेरे को ऐसा याद आ, मतलब सामने तो कैमरा दिख रहा है फॉर ऑब्वियस रीजंस, तो जब मेरे को याद आ रहा था, देन आई वाज लाइक, हाँ ये भी है, ये भी है, ये भी है, अदरवाइज इट वाज लाइक द इमेजिनेशन ऑफ अ फार्म being on the Himalayas, and that is what you want with your goals and everything, I believe. So the thing is, people, whenever I make videos, the very reason that some videos actually get late is because पहले उनको खुद पे अप्लाई करना होता है, देखना होता है काम कर रहा है नहीं कर रहा है, और फिर ट्राई करना है, ठीक है। तो उस लिए द थिंग वाज कि लाइक आई ट्राइड दिस एंड आई एक्चुअली लव्ड दिस। आई थिंक गॉर्क इसलिए पिक किया मैंने क्योंकि ये सबके मोबाइल में हो सकता है। Like for example, ChatGPT does not give audio function very clearly in all devices, I believe so. Gork, I think सबके इसमें बराबर बराबर चल रहा है। So what you can try doing is you can try this, okay? तो जब तुम लोग अपने सेल्फ से मिलके आते हो ना, भले 10-15 मिनट, और मे बी रोज कॉन्वर्जेशन करो, जैसे इसको अपनी डायरी बना सकते हो, दैट मैंने आज ये किया, इधर मैं मेरे गोल को अचीव किया, इधर मैंने मिस किया, तेरे हिसाब से क्या है भाई? और जहाँ तक मुझे समझ में आया, ये आइडियाज़ तो अच्छी दे रहा है, मतलब ही इज़ टॉकिंग ह्यूमन लॉजिक सेंस, ओके। ऐसा नहीं है कि वी डोंट नो कि वो क्या बोलेगा, या वी डोंट नो कि क्या होता है। व्हाट द ओनली डिफरेंस बिटवीन अस एंड AI, there are many differences, but one difference on the basis of decision making is that when we talk to AI now, when you are basically getting this understanding and idea of AI has a mass level of knowledge, okay? तो अगर आप सिर्फ एक ही सेक्शन में देख रहे थे, AI आपको दूसरे सेक्शन में पॉइंट करके बोलेगा कि देख ये भी है, ये भी है, ये भी है, तूने ये तीनों में चीज़ें मिस कर दिया। अब AI कितना सेफ है, कितना गलत है, कितना बुरा है, कितना अच्छा है, मुझे नहीं पता, ठीक है? तो तुम्हारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्या इसमें जाएगी? हाँ, जाएगी। तो तुमको फिगर आउट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को ऑनेस्टली नहीं पता, बट दिस इज समथिंग दैट आई ट्राइड एंड इफ आई फेल्ट दैट, ओके, सो आई शेयर्ड इट। सो दैट वाज आवर सेशन, माय लवली अमेजिंग पीपल, फॉर दिस थिंग, which is that your idea, my idea was ChatGPT, and then you people watched this, okay? So this is today's lecture, कि अपने फ्यूचर, आपका फ्यूचर आप ही बनाने वाले हो, और अगर आपका फ्यूचर आप बना रहे हैं, तो उस लिए इट इज़ मच बेटर, इट इज़ मच 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 बेटर you connect to your future. Now you can write a journal, you can meditate, you can do whatever you wish, all right? But this is a great idea as far as I think it is, all right? अब कुछ मैसेजेस आए हैं, एक बार देख लेते हैं। Please also reserve some time for yourself. Not saying don't work hard, will grind and work hard, but if everything is balanced for you and for use us, then will be best for everyone. Yeah, I also think so. Hello, my friend recommended you. Who's your friend? Let me know, yaar. It is amazing that somebody recommended me. I hope the recommendation is going correct now. Acha, SPO writes, and we are always here for you. Will support you whatever you decide. Much bro. We'll put a poll in the group because there must be some people जिन्होंने सोचा है कि सेल्फ डिसिप्लिन उनको पढ़ना था, and there must be some people जिन्होंने सोचा था कि डेली स्टोइक पढ़ना है। एंड ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि दोनों को थोड़ा ब्रीथर मिल जाएगा, तो आइडिया तो अच्छा है। ये कल आई बिलीव मंजूषा ने आइडिया डाला था ये ग्रुप में
यू कैन ऑल्टरनेट बिटवीन थिंग्स, बिकॉज आई नो हेक्टिक हो रहा है, आई नो बहुत हेक्टिक होता है तुम लोग के लिए, क्योंकि मेरे को क्या है, मेरे को बोलने में मज़ा आता है, मेरे को मैं जो काम कर रहा हूँ आई लव इट, बट विद दैट आई अंडरस्टैंड लर्निंग एंड लर्निंग 3 आइडियाज एवरी डे कैन बी हेक्टिक, क्योंकि फिर प्रैक्टिस करने के लिए, अप्लाई करने के लिए दिमाग भी तो बचना चाहिए. तो आई डू आई डू टोटली गेट इट. ओके, हेलो, दैट इज़ माई सिस्टर पीपल. सो अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच. ऑलराइट, अच्छा, सो बात ये है कि ये एक्चुअली हेल्प कर रहा है. हाँ, आई होप सो ये हेल्प करे. ठीक है, सो विल ट्राई टू पुट मोर एक्सरसाइजेस इनटू द फ्यूचर लेक्चर्स, ताकि हम लोग खाली ज्ञान ना दे, हम लोग उसको अप्लाई करना सीखें. ठीक है, अच्छा, तो मेरा ज्ञान दे के हो गया है. हाय मुस्कान एंड हाय आदित्य. किसी को कोई क्वेश्चन है तो बता दो. आई रीड बोथ द बुक्स एंड इवन इफ आई हैव read that day lesson, I still watch you. It's a good revision. Thank you so much, means a lot. Isha, it's on Discord. Where is the group? Shalini, hi Shalini. It is on Discord. If I can, I'll put the link here. You can directly join the group as right now. Okay, I have pasted the link. You will get it. If you people are wondering, मैं इतना लेट जवाब क्यों दे रहा हूँ? Because there is a buffer. There is a buffer between what you see and your chats. Okay. Acha, by the way, this is a new camera setup that I put yesterday. So I used to stream with this, which will still do. But मेरे को आज ये एक्सपेरिमेंट के लिए लेना था, इसके लिए मैंने इसको डिस्कनेक्ट कर लिया. अभी आई डोंट नो ये वापस कैसे कनेक्ट होता है, क्योंकि वो हमेशा अपने आप ही हो जाता है, तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया ऐसे. बट दिस इज़ वेयर वी आर अभी के लिए, तो दिस इज़ वेयर वी आर. किसी को कोई क्वेश्चन है यहाँ पे या कहीं और, बता देना, पूछ लेना, विल सी. ठीक है, सो आई थिंक वी आर डन. आज का सेशन कंप्लीट. 7:30 बजे मिलते हैं. साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़ना है, और आज का कॉन्सेप्ट अच्छा है, काफ़ी अच्छा है. थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव है, थोड़ा अलग है, पर अच्छा है. ऑलराइट, आज क्लास में थोड़ा अलग सा लगा है ना, मज़ा आ गया. चलो सही है, आपको मज़ा आ रहा है तो बहुत अच्छी बात. मेरे को भी मज़ा आया. मेरे को बीच में ऐसा लग रहा था कि लोग सोचेंगे क्या कर रहा है ये फ़ोन पे खुद से ही बातें कर रहा है और उसको स्ट्रीम कर रहा है. तो द एक्सप्रेशंस कमिंग ऑन माय फेस वर लाइक, आई वाज ट्राइंग टू, मतलब पता नहीं, तो आई वाज लाइक कि ठीक है, थोड़ा-सा, मतलब दैट वाज थोड़ा-सा ऐसा कॉन्शियस वाले एक्सप्रेशंस, बिकॉज़ यू रियलाइज़ यू आर सिटिंग एट द एंड ऑफ द डे, यू आर सिटिंग इन अ क्लोज्ड रूम विथ पीपल टॉकिंग. आपने रोक दिया और सुनना था. अरे अपन पूरा सेशन कर सकते हैं इसको सुनने के लिए. मैं तो बोलता हूँ, अगर कोई मार्केटिंग से है यहाँ पे, ठीक है, हम बेसिकली मार्केटिंग है पूरा सेशन कर सकते हैं. वी कैन डिसाइड दी पाथ फॉरवर्ड, क्योंकि अभी मेरे को भी पढ़ के, मतलब ऑनेस्टली सेल्फ डिसिप्लिन की एक बुक है. मैंने प्लान किया है कि मार्केटिंग की एक बुक पढ़ूंगा खुद के लिए. अगर तुम लोग को चाहिए तो उसको भी अपन शेयर कर देंगे. मतलब वो खुद के लिए है कि खुद को मार्केटिंग सीखना है, उसके लिए पढ़नी है मुझे, क्योंकि मेरे सिलेबस में भी है और मैं आगे जाके पढ़ाऊँगा भी. तो दैट इज़ वन थिंग दैट आई वांट. मार्केटिंग, उसके बाद में इन्वेस्टिंग, दैट इज़ अनदर बुक दैट आई वांट टू रीड इन द नेक्स्ट कपल ऑफ months. Missed the previous stream. Should I continue from here? Yes, 100%. Aditya, 100%, bro. Because nothing is connected. So, for example, I didn't say na, as seen in the previous lecture. I didn't say that. We just started with where we are. So, self-discipline is a book of 365 pages, one for each day. And we are currently on page, I believe we are on page 7. And if we go with the method of what GPT told us, that you have to alternate, then तो फिर continuity है ही नहीं. तो फिर मतलब you can join anything. Alright, so people, humans, guys, we will conclude this session, and thank you so much for joining in. I'll just see one last time if there are any questions remaining. I don't feel there are any questions remaining. So hi wannabe coder. So thank you so much everybody for joining in. एंड अभी कितना बज रहा है देखो, अभी 4:41 हो रहा है. अपने पास टाइम है. तुम लोग को चाहिए तो मैं वो कॉन्वर्जेशन कंटिन्यू कर सकता हूँ. तो वी कैन हैव अ कॉन्वर्जेशन, वी कैन गेट एन आइडिया. ओके, तो तुम लोग को अगर चाहिए, वी कैन गो इनटू दैट. वाइफ विल ट्राई इट फॉर लाइक 5-10 मिनट्स मैक्स, क्योंकि उससे ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, अननेसेसरी हो जाएगा. लेकिन अगर तुम लोग को चाहिए फॉर द पीपल, येस कंटिन्यू. ओके चलो लेट्स कंटिन्यू. तो मैं ना इधर रखने के लिए कुछ ले लेता हूँ, क्योंकि वो बेटर रहेगा. एक सेकेंड.
Just one second. Yeah. This book is good enough to keep. इसको रख के इसके ऊपर फोन रख के पढ़ेंगे अपन, ठीक है? That book would have been better, but ठीक है जितना है ठीक. So let's get started. So K6 continue, and okay, I think I'll get your messages later on eventually. All right, so let's go back. All right, so I'm back. ये अभी बात क्यों नहीं कर रहा है मेरे से? गॉग डिसकंटिन्यू हो जाता है क्या व्हेन यू गो अवे? तो टेक्स्ट में लिखा हुआ दिख रहा है, बट आई एम नॉट एबल टू स्पीक एनीथिंग, जैसे आई वाज टॉकिंग बिफोर. क्या हो गया भाई? 433 conversation success in design photography. All right, so I want to continue the conversation like we were having it. And mind you that my stream is also with me right now, because they were kind of enjoying what we were doing, and we want to continue that. भाई ये लिख के क्यों दे रहा है? अब लिख के दे रहा है, ये लिख के दे रहा है. Limited to sometime, maybe. I think it is limited to the first time you have a conversation with it. क्योंकि अभी जैसे ही मैं जा रहा हूँ ना, I wanted to continue the old stream that I was talking to. Can I go back and have a conversation with that? Because I was having a great conversation that is disconnected, and now I'm not able to have a Sounds like you were in the middle of a great chat. Unfortunately, I don't have access to previous conversation streams to pick up where you left off. But we can start fresh. Maybe dive back into whatever topic you were enjoying. What was it you were? चलो कोई ना, I'll figure it out. You leaked your lock screen password on Steam. अच्छा, क्या है? कैसे दिखा तुम लोगों को? आई गेस रिवर्जन में लिमिटेड होगा. लेक्चर ले रहा होगा. That's a nice one. I guess free version में limited होगा. नहीं यार, I have talked like at length. The only thing is अपन ने discontinue किया ना. अभी जब मैं वापस जा रहा हूँ तो chat history में से लिख के दे रहा है, तो मेरे को थोड़ा देखना पड़ेगा, figure out करना पड़ेगा. But we can have a conversation. We can all have a conversation with it sitting. Like एक डब्बा अपन को का ऐड कर देंगे, which is a great idea, which is a great business idea. Yeah. अच्छा ऐसा है क्या? एसपीओ हैकर है भाई, सही है. ऑलराइट, तो हो गया. अच्छा अभी तो ये तो कंटिन्यू होने से रहा, तो आई थिंक वी विल डिसकंटिन्यू. एक लास्ट ट्राई करता हूँ, अभी हो गया तो फिर मज़ा आएगा, ठीक है. मैं जैसे असिस्टेंट दबा रहा हूँ, ये कहीं और बात करने चला जा रहा है, तो मैं क्या करूँ? नहीं ढूंढना पड़ेगा, फिर मैं तुम लोग का टाइम वेस्ट करूँगा, वो सही बात नहीं है, ठीक है. सो विल कंक्लूड दिस कॉन्वर्सेशन, एंड आई थिंक आई विल बी यस आई विल बी हैविंग 7:30 अभी लेक्चर है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, उसके बाद में 7:30 को साइकोलॉजी ऑफ मनी का लेक्चर है. आई एम सो सॉरी. और उसके बाद में आई विल बी कमिंग लाइव ऑन यूट्यूब स्ट्रीम to make the notes for tomorrow. Okay, and I am trying to figure out anybody streamer. There is a streamer in my other group. I'll ask him. I have some questions about OBS. Okay,
Nah, we are good people. We are not hackers. Great. Great. Thank you so much. All right. So, what we'll do is, if anybody wants to join me, क्योंकि एसपीओ ने मेरे को आज मैसेज किया था कि भाई आप स्टडी विथ मी का लिंक डाल दिया करो, विच इज़ अ ग्रेट आइडिया, बट मेरे को ऐसा लगा कि लोगों को ऐसा लगेगा कि क्यों जबरदस्ती इतने सारे लिंक क्यों डाल रहे हो, इसके लिए मैं नहीं डाल रहा. मेरे को ऐसा लगा जो यूट्यूब पे आएगा आ जाएगा. So if anybody wants to study, actually मतलब the study version of me, I don't talk there. I just silently do my work. You can sit and silently do your work. And if you have any questions in the meanwhile, you can ask me. Okay. With studies, with making notes, definitely I won't be able to explain your concepts. Okay. But if you have any questions or something, or you just need a moral support, that is what Study Me 3 sessions are for. All right. So humans, we will be concluding this section and I will be meeting you at 7:30. All right. Hello. Bye bye. Bye people on Discord. Bye people on YouTube. Bye. All right. Bye Basant. ईशा. इसका नाम ईलू देखता हूँ फिर मेरे को ईशा बोलना पड़ता है. ओके ईशा. आर्या. हाय आर्या, यू आर हियर एज वेल ब्रो. हाय कौशिक. बाय कौशिक. Klaus, that is a nice name. Bye Muskan. Bye Wannabe Coder. Bye Aditya. Bye Ashu. Bye everybody. Bye people. Bye bye. And can you please share Psychology of Money link today? तो yes, I will share the Psychology of Money. डाल दिया करो लिंक भैया, नोटिफिकेशन लेते आती है. कल आर्यन भाई ग्रुप में लिखते नहीं तो पता भी नहीं चलता कि स्ट्रीम हो रहा है. अच्छा ओके. YouTube is so bad. I am always 10 minutes late because of this. I'll share the link very early, very very early. Okay. एक्चुअली स्ट्रीमिंग का कैसा होता है पता है, जब स्ट्रीम खुलेगा तभी लिंक आएगा, तो उसके लिए बट आई स्टिल शेयर द लिंक. Cool. So humans and amazing people and people with the DPs of cats and anime figures. Bye. Bye bye. And see you at 7:30. All right. Thank you so much, people. Bye. Primus. Bye. Bye, everyone. Bye bye. Bye bye. Thank you so much for being here. You people fill up my